अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्लाह है। आज हम रिस्क एंड रिटर्न के बारे में सेकंड लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम कंपनीज का रिस्क एंड रिटर्न फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंड होल्डिंग पीरियड यील्ड को स्टडी किया था और उनके डिफरेंट फार्मूलाज को स्टडी किया था और उसमें आर्ग्यू किया था कि ये इंडिविजुअल ईयर्स का रिटर्न हम इनकी बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं। आज हम उससे थोड़ा कम्प्लेक्स फॉर्म में जाते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ईयर्स की शेयर प्राइसेस अगर होती हैं तो उनकी बेसिस पे हम कैसे कंपनीज का रिटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो कंपनीज की शेयर प्राइसेस अवेलेबल हैं, निशात मिल्स लिमिटेड एंड मिजान बैंक लिमिटेड। 2016 से 2020 तक की शेयर प्राइसेस अवेलेबल हैं और ये डाटा बिजनेस रिकॉर्डर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप अगर इस डाटा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है और वीडियो में भी लिंक शो हो रहा है। आप उस पर क्लिक करके किसी भी कंपनी की शेयर प्राइसेस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इसके कॉलम देखें तो फर्स्ट कॉलम ईयर्स, देन हमारे पास शेयर प्राइसेस फॉर बोथ कंपनीज एंड देन डिविडेंड्स फॉर बोथ कंपनीज एंड देन होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंड होल्डिंग पीरियड यील्ड दैट वी विल कंप्यूट इन दिस वीडियो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न को हमने डिफाइन किया था एंडिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू। अगर हम यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रिटर्न फाइंड करें फॉर निशात मिल्स लिमिटेड, 101 2020 के सामने वैल्यू लिखी गई है, दैट इज क्लोजिंग प्राइस ऑफ द 2020 और 40 रुपीज डिविडेंड कंपनी ने इस साल पे आउट किया है और बिगिनिंग वैल्यू 2019 की जो क्लोजिंग वैल्यू है दैट विल बी बिगिनिंग वैल्यू दैट इज 106। तो HPR का फार्मूला बनेगा 101 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 106। सो द आंसर इज 1.3357। 1.3357 for 2019। 106 is the closing price, 40 rupees dividends and 126 is the beginning value. So the formula for the HPR will be so the formula for the HPR will be 146 divided by 126. The answer is 1.155. For the next years in 2018, 126 is the closing price and 40 rupees is the dividend and the beginning value is 149. So the answer of HPR is 1.1139. For the next year, 140 is the closing price and 47 is the dividends and the 152 is the beginning value. So the answer of the HPR will be 1.2938. 2016 का रिटर्न हम कंप्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसके लिए बिगिनिंग वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। इसी तरह हम मिजान बैंक लिमिटेड का भी रिटर्न फाइंड करेंगे। 2020 में मिजान बैंक की क्लोजिंग प्राइस है 104 और उसने 60 रुपीज डिविडेंड भी ऑफर किया था और बिगिनिंग वैल्यू 95 दैट इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द 2019। सो द फार्मूला इज 164 divided by 95. So the answer is 1.7286. 1.7286. For 2019, closing price is 95 and the 50 is the dividends during the year and 92 is the beginning value. So 95 plus 50 divided by 92. The answer is 1.5708. 1.5708. For the next year, 92 is the closing price, 35 is the dividends and 67 is the beginning value. So the answer is 92 plus 35 divided by 67 and the answer is 1.8985. 1.8985. For the next year, 67 is the closing price, 30 dividends and 68 is the beginning price. So 67 plus 30 divided by 68, that is 1.425. And for the HPY, we will simply
use HPR minus 1. So the values will be 0.3357, 0.155, 0.1139, 0.2938. And for the HPY of the Mizan Bank Limited, the values are 0.7286, 0.5708, and for the next years 0.8995, and last year's 0.4225. Now we have multiple values for the HPR and HPY. To convert these values into a single value, we will use average rate of return. And in finance, we have two different methods to compute average rate of return. These are arithmetic mean and geometric mean. Arithmetic mean is equal to summation HPY divided by n, and the geometric mean is equal to product of HPR raised to power 1 by n minus 1. अब हम इन दोनों कंपनीज के ऊपर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स अप्लाई करते हैं और जो हमारी सिलेक्टेड कंपनीज है उनका रिटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं. इन कॉलम्स में कुछ अब शेयर प्राइसेस की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम शेयर प्राइसेस को डिलीट कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे अपनी वर्किंग्स प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें. अरिथमेटिक मीन is equal to product of HPY divided by N. तो सबसे पहले हम HPY of NML की जो हमने वैल्यूज कंप्यूट की हैं उनका सम फाइंड करेंगे और उसको N से डिवाइड कर देंगे. तो अरिथमेटिक मीन के लिए हमने सम ऑफ HPY ऑफ द निशात मिल्क लिमिटेड फाइंड किया, दैट इज 0.8938 डिवाइडेड बाय N. N इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और हमारे पास यहाँ पे 4 years की वैल्यूज हैं तो इसी हम 4N यूज करेंगे. तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट कंपनी इज निशात मिल्क लिमिटेड इज 0.3593, 0.3593, that is 35.93%. सेकेंड वैल्यू का अगर हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करें तो अगेन उसके लिए हमें सम फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ HPY फॉर द मिजान बैंक लिमिटेड डिवाइडेड बाय N. मिजान बैंक के HPY का हमने सम फाइंड किया, दैट इज 2.6236 divided by 4. So the answer is 0.6559, 65.59%. तो हमने दोनों कंपनीज का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर दिया. फर्स्ट कंपनी के अकॉर्डिंगली हमारा रिटर्न 35% है और सेकंड कंपनी के अकॉर्डिंगली हमारा रिटर्न 65%, अप्रॉक्सीमेटली 66% है. अब हम इन्हीं कंपनीज के ऊपर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ये सारी वैल्यूज रेज करूंगा ताकि हम ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें. ज्योमेट्रिक मीन कंप्यूट करने के लिए जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है, GM is equal to product of HPR raised to power 1 by n minus 1. Product of HPR means 1.3357 multiply by 1.155 multiply by 1.1139 multiply by 1.2938. So the product of HPR for the Nishat Mills Limited is 2.3357.
2 to 3 and raised to power 1 by 4 minus 1. The answer is 1.221 minus 1, that is 0.221, that is 22.1%. If we compute the geometric mean for the Mizan Bank Limited, geometric mean is equal to product of HPR for the Mizan Bank Limited, and the answer of the product of HPR for the Mizan Bank Limited is 7.349 and raised to power 1 by 4 minus 1, and the answer is 0.6441, that is 64.41%. So we have computed the arithmetic mean and geometric mean for the both companies, and the answer of arithmetic mean is that the return on Nishat Mills Limited is 35%, whereas geometric mean shows that the return is 22%. For the Mizan Bank Limited, the arithmetic mean shows that the answer is 65%, approximately 66%, and the geometric mean shows that the return is 64.41%. In finance, we use normally arithmetic mean. Geometric mean is a superior measures, but हम अपनी सिंप्लिसिटी को देखते हुए, आसानी को देखते हुए अरिथमेटिक मीन को यूज करते हैं. आल्दो ज्योमेट्रिक मीन एक सुपीरियर मेजर है, एक बेटर मेजर है, लेकिन फाइनेंस में हम अरिथमेटिक मीन को ही यूज करते हैं. हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली हम 2021 में हमारा जो एस्टिमेटेड रिटर्न है दैट इज 35% फॉर द निशात मिल्स लिमिटेड and 65% for the Mizan Bank Limited. That's all for the today's videos. In next video, I will try to explain the risk of these companies. If you have any questions, you can write in the comment section. I will try my best to answer your comments. Thank you. Take care. Allah Hafiz.